Yes. So in the last lecture, we have seen what really happens when you make OWD as private for any of the object. So basically, there is like two things that has happened. Now, first thing is whenever we set OWD as to be the private, then inside the object, if you create any of the record, right, that record is going to be visible to the owner and to the manager. So this is what happened. So yesterday, like we have seen this. Now let's discuss about the point number 2. So whenever we make OWD as to be the private, what is happen? That is what we are discussing, and have one diagram for this. Let me go with this diagram first. See, whenever we make OWD of any of the object, like for the account object we created OWD as to be the private, right? For any of the object. Now you know this. What exactly is OWD? And then how to change the OWD, what are the different OWD options? That is also we have seen in the last lecture, that there are 9 different options of the OWD, starting from the private, and then public read only. Let's have a quick revision. So there are 9 different options in the OWD, starting from the private, and then public read only, then public read write, and then public read write transfer, full access, no access we only use, and the control by parents. So altogether, there are 9 different OWD options. So what we have done in the last lecture is, like, for the account object, we have changed the OWD as to be private. This we know. For the account object, if I wanted to say this, I could, I'll go to the setup and then administer. You need to expand the security controls. In the security control, there we have sharing settings. Okay. So the very first thing what we see on this page is OWD. So what we have done yesterday is, like, for the account object, we have changed. It was initially it was public read only, but then we have changed it to what? Private. So this means for the account object, we have changed the OWD option as to be the private. Now what we are discussing over here is what is going to be happen when you set OWD as to be the private. The first thing we have discussed it yesterday itself. Okay, whenever we make OWD as private, then everything, whenever we create a record inside that object. So whenever we create a record inside the object, that record will be visible to the owner, the one who created the record, and second, who is the second person? The second person will be the manager. Apart from these two people, no other will have the access. That is what we have seen. Now we are going forward, and then we are understanding one more thing, what is happened when you set OWD as to the private. So let's come to this diagram and let's understand the fact. See, for any of the object, whenever you set OWD as private, for any of the object, whenever you set OWD as to private. So one more thing is happen apart from that record accessibility. One more thing is happen. Your sharing mechanism is activated. Your sharing mechanism is activated. So what does it mean? What does it mean? See, this is one of the interview question also. This is one of the interview question. Let me show you that. And then we will see, like, how to answer this question. So, okay. 1 second, let me try to locate the question. Role hierarchy, OWD, rather different. So, yeah, somewhere here is like, when you will be able to share a record. Yeah, this is something. Or rather, how to share a record. Or rather, you could also say, what does it means by record sharing? Okay, what does it means by record sharing? This is one. So there could be 2 to 3 different questions they could ask you on this. So one of them is like, when will be you able to share a record to any user? If you wanted to share a record to anybody, how to do that? How to share a record to any of the user? Or rather, what does it means by the record sharing? Fine. Now see, we learned this yesterday, like after making OWD as private.
sorry, after making OWD as to be the private, we have seen, what is the observation. Yesterday, we have seen that by making this OWD as to be the private, this development user, whenever it creates a record, the record is visible to him and to his manager. I mean, these are the two people, those who can access the record. These are the two people, those who can access the record. Now, अकाउंट पर्टिकुलरली अकाउंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमने जो OWD ऑप्शन प्राइवेट किया है वो किसके लिए किया है, अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए. सो यहाँ पे हम डिस्कस जो कर रहे हैं ना, द फैक्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज जस्ट रिलेटेड टू द अकाउंट, और रादर वो ऑब्जेक्ट जिसकी OWD आपने प्राइवेट की है. तो कल हमने बेसिकली अकाउंट ऑब्जेक्ट की OWD को चेंज किया, कौन से ऑप्शन से, प्राइवेट ऑप्शन से. तो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द अकाउंट. ठीक है, चलिए. तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में डेवलपमेंट यूजर ने या इनमें से किसी ने भी एक रिकॉर्ड अगर क्रिएट किया है, दैट रिकॉर्ड इज ओनली विजिबल टू हिम. व्हाई? बिकॉज ही इज द ओनर एंड टू हिज मैनेजर, जो सीईओ है, ट्रेनिंग बैच यूजर, यही दो लोग हैं जिनको वो रिकॉर्ड नजर आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस नो अदर, लाइक मैनेजर, टेस्टिंग यूजर या फिर कस्टमर यूजर, दे कैनॉट एक्सेस द रिकॉर्ड वट एवर इज बीइंग क्रिएटेड बाय दिस यूजर, राइट. नाउ अब ये तो एक फैक्ट हो गया. अब हम बात करते हैं एक दूसरे सिनेरियो की, वेयर सी वी इंटेंशनली वांट के इन तीनों में से कोई एक यूजर है. फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर कि मैनेजर यूजर शुड हैव द एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, टेस्टिंग यूजर को नहीं दिखा तो भी चलता है, कस्टमर को नहीं दिखा तब भी चलता है. बट इंटेंशनली, as per the policy of the organization, the manager user should have the access of the record before, before the record actually goes to CEO. Before the record actually goes to the CEO, company की अपनी एक policy है कि the record should first, instead of giving it directly to the CEO, the record should first go to CFO या manager, और उसके बाद वो CEO पे जाना चाहिए. ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये एक कंपनी की पॉलिसी है. तो अभी जो इस वक्त आपने OWD को प्राइवेट किया है, उससे हो तो ये रहा है कि ये यूजर अगर कोई क्रिएट करता है रिकॉर्ड, दैट रिकॉर्ड विल बी विजिबल टू हिम एंड टू द मैनेजर डायरेक्टली, ना, टू द सीईओ. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू पीपल, नो वन एल्स हैज हैविंग दिस एक्सेस. बाकी किसी को एक्सेस नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर अब एक नया कंसेप्ट अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड शेयरिंग. तो whenever you set OWD as to be the private, whenever आप जब भी कभी आप OWD को प्राइवेट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो एक तो वो यूजर जिसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है और उसका मैनेजर, केवल ये दो लोग होते हैं जिनको रिकॉर्ड एक्सेस होता है. लेकिन अब अगर इंटेंशनली हमको किसी और को भी एक्सेस देनी है ना, इंटेंशनली हमको किसी और को भी एक्सेस देनी है, देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड शेयरिंग. तो रिकॉर्ड शेयरिंग का जन्म कहां से होता है, पहले आप वो समझो. आप सी, अगर OWD प्राइवेट है तो ही शेयरिंग की बात कर सकते हैं. वैसे OWD में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, राइट. OWD में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. प्राइवेट को छोड़ के बाकी अगर मैं बात करूं, पब्लिक रीड ओनली या पब्लिक रीड राइट या फिर रीड राइट ट्रांसफर या फुल एक्सेस, किसी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लेवल ऑफ एक्सेस पब्लिक है, लेवल ऑफ एक्सेस पब्लिक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लेवल ऑफ एक्सेस पब्लिक है, तो इसका मतलब ये होता है, पब्लिक से मतलब पब्लिक रीड ओनली, रीड राइट, सब कुछ आ जाता है इसमें. ठीक है, मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके, ये सारे ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो OWD ऑप्शन है, अगर वो पब्लिक है, अगर वो पब्लिक है, फिर चाहे वो पब्लिक रीड ओनली हो, फिर चाहे वो पब्लिक रीड राइट हो, या फिर रीड राइट ट्रांसफर, या फिर पब्लिक फुल एक्सेस. इंपॉर्टेंट क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो OWD है, OWD ऑप्शन अगर पब्लिक है, तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन एल्स. पब्लिक होने का मतलब भी यही होता है, पब्लिक होने का मतलब भी यही होता है कि द रिकॉर्ड इज एक्सेसिबल टू एवरीवन. हाँ, फिर पब्लिक रीड ओनली का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं अगर ओनर हूं तो मुझे तो मिल रहा है, आई एम हैविंग द फुल कंट्रोल. बट अगर आप उस रिकॉर्ड को देख रहे हो, यू आर जस्ट हैविंग रीड ओनली रिकॉर्ड, आपको रीड ओनली एक्सेस है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. रीड राइट मतलब आप देख भी सकते हो, राइट भी कर सकते हो, है ना. वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, डोंट वरी. ये आएगा अपने डिस्कशन में, जब हम रीड ओनली, रीड राइट और रीड राइट ट्रांसफर ये सब क्या होता है उस पर चर्चा करने वाले हैं. फिलहाल हमारा मुद्दा कुछ और है. मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि अगर आप OWD को प्राइवेट करते हो और अगर OWD पब्लिक है, तो इसके बीच में अंतर क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है. सी, if the OWD option is public, then by default the record is visible to everybody.
जो कोई भी रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल अकाउंट है ना, कल अकाउंट इनिशियली इट वाज क्या था, वो पब्लिक हुआ करता था, पब्लिक रीड ओनली, ये ऑप्शन यहाँ पे था, राइट। सो व्हेन अकाउंट वाज पब्लिक रीड ओनली, व्हेन अकाउंट वाज पब्लिक रीड ओनली, तो रिकॉर्ड जो क्रिएट हुआ था अकाउंट में, इसके पहले जब हमने इसको जब कल चेंज किया उसके पहले ये क्या था, सो अकाउंट की ओडब्ल्यूडी ऑप्शन वो एक्चुअली पब्लिक रीड ओनली। अभी आपको याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप यकीन कर सकते हैं। सो कल जब हमने इसको चेंज किया, अकाउंट की ओडब्ल्यूडी को प्राइवेट किया, तो उसके पहले ये क्या हुआ करता था, इट वाज पब्लिक रीड ओनली। तो अकाउंट का जो प्रीवियस ओडब्ल्यूडी ऑप्शन था दैट वाज पब्लिक रीड ओनली, जैसे कि अभी आपको यहाँ दिख रहा है यूजर पे, या फिर आपको दिख रहा है पब्लिक रीड राइट प्रोडक्ट पे ना, यू आर सीइंग इट, आपको जहां कहीं पे दिख रहा है कंजम्पशन शेड्यूल पे। तो इसका मतलब ये होता है कि व्हेन इट वाज पब्लिक, पब्लिक ऑप्शन जब था इसमें, पब्लिक रीड ओनली या जो भी था, सो दैट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट वाज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, सभी को दिख रहा था। और यही रीजन था, this was the reason why, if development user creates a record, if testing user creates a record in the account object, if manager, if vice president, customer user, everybody, if any one of them creates a record inside the account, rather ये भी also, तो वो सबको विजिबल था। Why? Because account object का OWD था public. सो पब्लिक OWD का मतलब ही होता है कि रिकॉर्ड इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। तो जब रिकॉर्ड सभी को अवेलेबल है, तो यहाँ शेयरिंग का मतलब ही नहीं आता ना, फिर शेयरिंग का कंसेप्ट ही नहीं बैठ सकता यहाँ पे। भाई अगर मैं आपको कोई चीज नहीं मिल रही है और फिर मैं आपको दे रहा हूँ, तो चलो ठीक है, मतलब वो आपसे हिडन है, आपको एक्सेसिबल नहीं है कोई रिकॉर्ड, देन आई एम प्रोवाइडिंग द एक्सेस, दैट इज समथिंग आई कुड से कि हाँ चलो हमने इनको शेयर किया। बट अगर एक रिकॉर्ड है एक ऑब्जेक्ट में, वो मुझको भी एक्सेसिबल है, आपको भी एक्सेसिबल है, और शायद और तीन चार लोग हैं उनको भी एक्सेसिबल है, व्हेन एवरीवन ऑफ इज हैविंग एवरीवन ऑफ अस इज हैविंग द एक्सेस, तो उसमें हम क्या नया कर सकते हैं ना, व्हाट न्यू वी कुड डू दैट, द रिकॉर्ड इज बाय डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। तो यहाँ जब पब्लिक ओडब्ल्यूडी का ऑप्शन अगर पब्लिक होता है, तो देयर इज नो सच कांसेप्ट ऑफ शेयरिंग, याद रखो। व्हाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट द रिकॉर्ड इज शेयर्ड टू एवरीवन ऑफ देम, राइट। द रिकॉर्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इफ इट इज अकाउंट तो अकाउंट रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी, व्हाटएवर, if the object OWD is public, then by default the record is accessible to everybody. अब यहाँ पे थोड़ा ना शेयरिंग का कंसेप्ट आता है, ये तो सभी को मिल रहा है। शेयरिंग का कंसेप्ट तो एक्चुअली तब आता है जब चीजें हाइड होती हैं, और चीजें हाइड कब होती हैं, रिकॉर्ड्स हाइड कब होते हैं, अब भी हमने पढ़ा कि whenever you make OWD as private, तब तब आपने देखा कि what really happens was कि भाई इस यूजर ने एक रिकॉर्ड बनाया था जो कि एक इसको और एक इसको मिल रहा था, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा था। when OWD is set to be the private, अब यहाँ से कंसेप्ट आता है शेयरिंग का कि किसको किसको नहीं मिल रहा है, who are the users, those who don't have the access, this manager user don't have the access, testing user don't have the access, customer user don't have the access. Now if we intentionally wanted to provide them the access, how to do that? That is what the concept of sharing mechanism. तो देखिए, आपसे जब भी ये सवाल, अब अगर ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से आई हों, तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। कुछ कभी भी जब इंटरव्यू में शेयरिंग मैकेनिज्म, रिकॉर्ड शेयरिंग, हाउ टू शेयर द रिकॉर्ड, व्हाट डज इट मीन्स बाय रिकॉर्ड शेयरिंग, कभी भी ये क्वेश्चन जब आया, तो ये डायग्राम है आपके पास में, ये ड्राइव पे डाल दूंगा मैं, ये शायद डला हुआ भी है, देख लेते हैं। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है अपने आंसर का? एक्चुअली शेयरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू शेयर, वो आते हैं हम उसके ऊपर में। बट व्हाट आई वांटेड एवरी वन ऑफ यू सेड कि जब भी ये क्वेश्चन आए अबाउट रिकॉर्ड शेयरिंग एंड समथिंग लाइक दैट, आपको एक स्टेप पीछे आना है, ठीक है। एंड यू नीड टू स्टार्ट योर आंसर बाय डिस्क्राइबिंग दिस फैक्ट कि शेयरिंग पे तो हम आने ही वाले हैं, ऑफ कोर्स वी आर अबाउट टू कम टू द शेयरिंग जो क्वेश्चन है। लेकिन हाउ आई वांटेड एवरीवन ऑफ यू टू डिस्क्राइब दिस आंसर, सी द आंसर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट you guys need to say is like कि whenever the object OWD, whenever the object OWD, object मतलब कोई भी object, account, contact, opportunity, even your custom object, hiring manager, position, candidate, whatever, whenever the object OWD is set to be the private, यहाँ से आपको शुरुआत करना है। whenever the object OWD is set to be the private, whenever the object OWD is set to be the private, then Salesforce activate the sharing mechanism. Then then there is a concept of sharing. अगर ऑब्जेक्ट OWD प्राइवेट है तभी तो बात होगी शेयर होने की, बिकॉज यू वी नो दैट। अभी कितनी बार मैं इसको डिस्कशन में लाऊं, लेकिन बात तो कंसेप्ट वही है कि व्हेन OWD is private, when OWD is private, when OWD is private,
तभी जाके ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड है वो आपका किसी यूजर को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। अब जिसको नहीं दिखता है उनको शेयर करना है। जब रिकॉर्ड हिडन है तभी तो वो कंसेप्ट आएगा। अगर रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट इसको भी है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इफ एवरीवन ऑफ इज हैविंग एक्सेस, जो कि पब्लिक में होता है, तो यहाँ पर आप शेयरिंग मैकेनिज्म की बात ही नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट द रिकॉर्ड इज शेयर टू एवरीबॉडी, सभी को वैसे ही मिल रहा है, भंडारा है, सबको मिल रहा है, आओ और खाओ और जाओ। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है? यहाँ कोई शेयरिंग का कंसेप्ट आता ही नहीं है। एक्चुअली शेयरिंग का कंसेप्ट तभी आता है जब आप ओडब्ल्यूडी को प्राइवेट करते हो। इसीलिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि ये क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जाएगा। रिकॉर्ड शेयरिंग क्या है, हाउ कुड यू शेयर द रिकॉर्ड्स टू मल्टीपल यूजर्स, कई अलग अलग तरीकों में हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है रिकॉर्ड और शेयर, दो वर्ड्स, एक है रिकॉर्ड, दूसरा शेयर। रिकॉर्ड है शेयर करना है, शेयर करना है अलग अलग यूजर्स को, जो कुछ भी कैसे भी घुमा फिरा के पूछे। मुद्दे वाली बात यह है कि दे आर आस्किंग यू टू एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन्स बाय रिकॉर्ड शेयरिंग. So when this is the question in the interview, what you need to say is always, every one of you, just take a step back and then start saying this, कि whenever the object OWD is set to be the private, then only we could share the record. Then only we could share the record. They could even ask you कि अच्छा OWD अगर public है तो क्या, तब आप शेयर नहीं कर सकते हो क्या? Because what you are saying is like, okay, whenever the object OWD is private, then only we could share the record. They could cross question you, okay, OWD have 9 different options. What happens when the OWD is public? तो आप कहोगे, see, whenever the OWD is public, by default the record is visible to everybody. Everyone is having access default. What could we do in that case? What new we could do? कि कुछ नया हम क्या कर पाएंगे जब रिकॉर्ड वैसे ही एक्सेसिबल है? तो रिकॉर्ड शेयरिंग का कंसेप्ट तो तभी पैदा होता है जब आपके ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यूडी क्या की गई है, प्राइवेट। सो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां से आंसर करें इसको एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट डीपली. चलो, so whenever we set OWD of any of the object has to be the private, then only we could talk about, then only we could discuss about, then only the sharing mechanism is activated. Now let's come to the sharing. There are three different types of sharing. There are three different ways. There are three different ways of record sharing. In the Salesforce, you could share a record of any object: account object record, opportunity object record, contact object, campaign object, hiring manager, position, candidate, right? Any of the object. In the Salesforce, you could share the record in three different ways. There are three different ways you could share a record. What are those? Manual sharing, automatic sharing, automatic one and same thing, and apex sharing. There are three different ways you could share a record. ये भी एक क्वेश्चन है कि what are the different ways I could share a record? ये है यही कहीं पर. What are the different types of record sharing in the Salesforce? What are the different types of record sharing? If you wanted to share a record, what are the different ways? So yes, there are three different ways. In the Salesforce, there are three different ways a record could be shared of any of the object. What are those ways? Manual sharing, automatic sharing, and apex sharing. How to perform the manual sharing? Manual sharing is performed by the sharing button. We are going to see this, don't worry. I'm just explaining in terms of the diagram what you are seeing right now, So how to perform the manual sharing? The manual sharing is done with the sharing button. There is a sharing button where I'm going to show you that, don't worry. How to perform the automated sharing? We are going to study about one of the concept called as sharing rules. So by writing the sharing rules, we can perform the automated or automatic sharings. Okay. How to perform the apex sharing? Apex sharing is done with the apex trigger. Now this is something what we are going to learn in the development, right? तो अभी admin में है हम, तो admin में हमारा कहाँ तक cover होगा? We are going to understand about manual sharing and the automatic sharing, right? ये दो चीजें. Apex sharing for now हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है इसके ऊपर जो हम पढ़ने वाले हैं. वो क्वेश्चन ये रहेगा कि if you have manual sharing, if you could share a record manually, if you could share a record automatically, that means if you have sharing buttons, if you have sharing rules, if you could share the record by either using manual or automated sharing, why? What is the reason you should go with the apex sharing? This is also one of the interview question, right? What is the reason why we at all wanted to write the apex trigger? तो देखने वाले हैं, ये भी देखने वाले हैं, ठीक है, everything. After that, what are the different ways? There are three different ways a record could be shared. Manually shared using sharing button, automated sharing using sharing rules,
and the Apex sharing by writing the Apex triggers. Okay. Now, what are the different level of access? If at all I am sharing a record to somebody else, as an user, I'm sharing a record to another user. So probably, for example, if I'm sharing the record to like Chetan, to Chetan and Akshay and then Prajwal, these are the three persons that I'm sharing a record. So what kind of access, I could give them? I could give them two different types of access, read only and read write. Now, very obviously, read only means if if the Prajwal is having read only access, that means the record what I have shared to the Prajwal, he could only read the record and he could do nothing else apart from just reading. वो सिर्फ देख सकता है इसको. And for the Chetan, I have decided, read write access. That means Chetan could even read. And if at some places Chetan wanted to have some corrections, Chetan wanted to edit some record, Chetan wanted to change the values of some of the fields, he could do that. Why? Because he's having read write access. So whenever we share a record, these are the two possibilities, read and write, read only and read write. These are the only two possibilities that I could, give you. तो यहाँ पर एक चीज कम है, आई कुड गिव यू रीड परमिशन, आई कुड गिव यू रीड राइट परमिशन. वन थिंग विच इज नॉट ओवर हियर. कोई बता सकता है क्या क्या नहीं है बाय द वे? एनी वन ऑफ यू? ट्रांसफर. ट्रांसफर के अलावा डिलीट करने की परमिशन नहीं है. तो जब भी मैं रिकॉर्ड शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात. Whenever we share the record, this is also one of the interview question. ये मैं भी पूछता हूँ इनफैक्ट कि if I share you a record, if I share you a record, इस पे ध्यान मत दो, ऐसी ड्राइंग बना रहा था मैं. If I share you a record, can you delete it? This is one of the question जो generally मैं पूछता हूँ कि if I share you a record, either manually sharing button से, automatic sharing से या Apex sharing से, whatever. Important ये है कि मैंने एक रिकॉर्ड आपको शेयर किया. Can you delete that record? तो आपको आंसर देना है कि नहीं. Whenever we share a record, there is only two kinds of level of access I could give you. That is read only and read write. If you have read only permission, you could only read the data. If you have reading and writing permission, you could even read and you could customize, you could edit the record. But in both of the cases, the second person to whom the record is shared, he cannot delete the record. He cannot delete the record. Then the next question is, okay, if you wanted the second person that he should have this ability, can he could delete the record? How to do that? उस पे आने वाले हैं. Don't worry. वो भी हमारा एक चर्चा एक आने वाला एक टॉपिक है जिसमें हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर हम चाहें कि अगर मैंने एक रिकॉर्ड चेतन को दिया है तो चेतन के पास ये राइट्स होना चाहिए कि वो उस रिकॉर्ड को चाहे तो डिलीट भी कर सके. तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हम शेयरिंग तो नहीं, कुछ और पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फिलहाल हम जिस टॉपिक पे हम उसी की बात करेंगे और उसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे. चलिए, सो एक एक स्टेप से फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसके पहले कि मैं फाइनल आऊँ प्रैक्टिकल पे. देखो यार, सबसे पहली बात, कभी भी रिकॉर्ड शेयरिंग के बारे में जब भी बात आई, अब मैं देखो बहुत कहना चाहिए कि आपको बिल्कुल वही तरीका बताता हूँ मैं जिस वे से आपने आंसर देना है, सो दैट सामने वाले को आपका जो इंप्रेशन क्रिएट हो ना, वो बहुत मजबूत क्रिएट हो. मतलब ही कुड अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज हैविंग अ वेरी डिटेल्ड नॉलेज एंड वो अगला क्वेश्चन का भी आंसर यू कुड गिव इन दिस क्वेश्चन ओनली. तो इस तरह से इंटरव्यू दोगे ना तो लाइक सिलेक्शन के जो चांसेस है ना वो बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है. इसीलिए प्लीज ये सब चीजें जितनी भी आज तक हुई हैं और जब कभी भी बात निकली है रिलेशनशिप पर, ऐसा बोलो या ईमेल टेम्पलेट्स पे या वर्क फ्लोस पे या प्रोसेस बिल्डर पे या डिफरेंस पे, जो भी है जिस वे से मैंने बताया ना, प्लीज उसको फॉलो करो. ठीक है, चलो. तो whenever there is any question, if you got this question, शेयरिंग के बारे में, रिकॉर्ड शेयरिंग के बारे में बात चल रही है, I wanted every one of you to start it from here. Whenever the object OWD is set to be the private, if you select the OWD as private, then only you could share the record to any of the users. It means if the OWD is public, then record is by default is available to everybody. By default the record is shared. तो फिर उसमें शेयरिंग का कंसेप्ट आता ही नहीं है. तो शेयरिंग कंसेप्ट ही तब आता है, शेयरिंग का जो कंसेप्ट है रिकॉर्ड का, इसका एग्जिस्टेंस ही इस बात पे मतलब इसकी जो वजूद है, इसका जो वजूद है वो तब सामने आता है जब आप OWD को प्राइवेट करें. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप शेयरिंग के बारे में बात ही मत करिए. जरूरत ही नहीं है आपको बात करने की. वाई? बिकॉज वो तो रिकॉर्ड वैसे ही शेयर्ड है.
ठीक है, चलो, सो इसकी हम शुरुआत हमेशा यहाँ से करेंगे कि whenever the object OWT is set to be the private, then only we could share the record. Now, how many different ways are there? Like there are three different ways. There are three different ways of record sharing. There are in the Salesforce, there are three different ways a record can be shared. What are those? Manual sharing, which is done by sharing button. Automated sharing, the automatic sharing, which is done by writing sharing rules. And then Apex sharing, which is done, yeah, which can be achieved by writing Apex triggers. Now, whenever we share the record, there are two different level of access that I could give to the second person, either by manual, automated, whatever, whatever you perform. The kind of level of access the second person is going to get, there are two different options, read only and read write. Now you understand what is read only and read write. Now, if the record is being shared with this access, or rather this access, to whom the record could be shared, to whom the record could be shared. See, record can be either shared to the single user or to the multiple users also. आप चाहें तो एक रिकॉर्ड एक यूजर को या एक से ज्यादा यूजर्स को भी एक ही समय पे शेयर कर सकते हो. बट सी, अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और है. व्हेनेवर वी वांटेड टू शेयर रिकॉर्ड टू मल्टीपल यूजर्स, हमको पब्लिक ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं. तो पब्लिक ग्रुप्स इज समथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ यूजर्स. जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, जहाँ पर आप काफी सारे यूजर्स ऐड हो जाते हो. सो इफ आई शेयर समथिंग ऑन टू दैट ग्रुप, तो वो बाय डिफॉल्ट जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के सभी को मिल जाता है. इनडायरेक्टली मल्टीपल यूजर्स को शेयर होता है. बस सेम कंसेप्ट है और कुछ नहीं. Salesforce also allow you to create, group of users, something called as public group. So if someone asks this, what is a public group? Well, simple. A public group is a group of peoples, group of users, group of Salesforce users. ठीक है. सो व्हेनेवर वी वांटेड टू शेयर रिकॉर्ड टू द मल्टीपल यूजर्स, तो हमें पब्लिक ग्रुप फॉर्म करने पड़ते हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक हाउ टू फॉर्म द ग्रुप्स, वो भी हम पढ़ने वाले हैं. तो मैंने पहले कहा था कि काफी इट्स अ लिटिल बिट लेंथी टॉपिक, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ शेयरिंग और सिक्योरिटीज में आप पढ़ने वाले हो, राइट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द शेयरिंग मैकेनिज्म. सो व्हेनेवर द OWD इज सेट टू बी द प्राइवेट, दो चीजें होती है. पहला रिकॉर्ड की एक्सेसिबिलिटी और दूसरा आपका शेयरिंग मैकेनिज्म. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं. चलिए, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द मैनुअल शेयरिंग. सबसे पहला मैनुअल शेयरिंग, हाउ टू परफॉर्म द मैनुअल शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग बटन. ओके, सो सी, let me go with this manage users and users. Right now we know one thing. हम जानते हैं एक चीज को जो हमने प्रैक्टिस में लाया है, जो एग्जांपल कि if I log in into the development users account, so in this development users account, I created one of the record inside the account object, this record, development user record number 1. Now this record is visible to him. Why? Because he's the owner. He is the owner. Let me log out from here. And now if I go to this account of administrator, that means this manager, a common manager, CEO user, right? He can also access this record. Why? Because he is the manager of this development user. Okay, fine. Let's close this. You also know this. कल भी हमने देखा था, आज फिर से देख लेते हैं कि customer user, if I try to log in and see whether customer user can now see the records, so all accounts में जाता हूँ. See, there is no such record. That means the customer user doesn't have any record to be get access. Okay, fine. Let's log out from here. Customer को कुछ नहीं दिख रहा है, and let's do this with the manager. So one by one ही आप कर सकते हैं, एक साथ सबको लॉगिन नहीं कर सकते, एक बार में एक ही लॉगिन हो सकती है. So it's all account. He is also doesn't have the access. Log out. अब आप देख लीजिए टेस्टिंग यूजर को. चलिए इसको भी लॉगिन कर लेते हैं. टेस्टिंग यूजर also doesn't have the access. See. So ये मैंने बस रिवाइज किया और कुछ नहीं, मैंने बस रिवाइज किया. So now it's absolutely clear कि no one is having the access, right? The record which is being created by the development user, no one is apart from the owner and to the manager. Manager ये है, ये दो लोगों के अलावा कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक्सेस है. ठीक है, अब आते हैं हम रिकॉर्ड शेयरिंग पे. चलो एक यूज केस यहाँ बना रखी है मैंने कि क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड बाय लॉगिन इनटू द डेवलपमेंट यूजर्स अकाउंट. ठीक है, तो डेवलपमेंट यूजर की आईडी में जाके एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करो.
तो दैट इज ऑल्सो वी ऑलरेडी हैव डन दिस अकाउंट, ठीक है, उसमें हम कर चुके हैं। एंड देन शेयर दिस रिकॉर्ड टू द मैनेजर यूजर, मैनेजर यूजर को शेयर करिए विद रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि डेवलपमेंट यूजर ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है जो कि किसी को भी एक्सेसिबल नहीं है। नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, मैनुअल शेयरिंग। क्या पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, मैनुअल शेयरिंग। मैनुअल शेयरिंग कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग बटन। आओ देखते हैं। तो एक यूज केस है कि आप डेवलपमेंट यूजर की लॉगिन पे जाएं और एक अकाउंट में एक रिकॉर्ड क्रिएट करें, जो कि हमने पहले से ही कर लिया है। अब बस हमें क्या करना है, हमें इस रिकॉर्ड को शेयर करना है मैनेजर यूजर को। कौन सी एक्सेस के साथ, रीड ओनली एक्सेस के साथ। चलिए देखते हैं। सो मैं डेवलपमेंट यूजर पे एक बार फिर से लॉग इन करता हूँ, और ये है वो रिकॉर्ड जो मैंने क्रिएट किया था। दिस इज द रिकॉर्ड, दिस इज द रिकॉर्ड, जो कि फिलहाल किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये रिकॉर्ड किसी को नहीं दिख रहा है ना। मैनुअल शेयरिंग कैसे करते हैं, दिस इज द बटन, शेयरिंग। सी दिस इज द बटन। जैसे मैंने कहा ना कि मैनुअल शेयरिंग इज ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग। एक बटन होता है, कौन सा बटन होता है, शेयरिंग बटन। मैनुअल शेयरिंग, टू परफॉर्म द मैनुअल शेयरिंग, हाउ टू परफॉर्म दैट, देयर इज अ शेयरिंग बटन। कहाँ है वो शेयरिंग बटन, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज द शेयरिंग बटन। सो आई वांटेड टू शेयर I wanted to share this record. Which record? Record number 1. ठीक है। चलिए उसके पहले एक और चीज करता हूँ मैं आपको, एक रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेता हूँ। लेट मी क्रिएट वन मोर रिकॉर्ड, डेवलपमेंट यूजर रिकॉर्ड नंबर 2। ठीक है, एक रिकॉर्ड और क्रिएट करता हूँ, रिकॉर्ड नंबर 2। ठीक है। The type is customer channel. The industry is manufacturing. The annual revenue is 10 lakh. The rating is warm. The phone number is 667755443311. Same as fax also. Website is probably test2.com, and ownership is subsidiary. Rest of the things I'm keeping it blank. Active status is yes, and when customer priority is low. So with all this detail, let me save this record. एक record मैंने और बना लिया. Now inside the account object we have two records. Record number 1, record number 2. ठीक है, we have two records. If I go with all accounts also I could see the same things. So I have two records, record number 1 and record number 2. ये दो रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। अब मैं ऐसा करता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर 1 ओपन करता हूँ। ठीक है, चलिए। So रिकॉर्ड नंबर 1 आई एम ओपनिंग, and then I'm clicking. This is record number 1. This is record number 1. I'm sharing this record. I'm clicking this button. See, share. तो अब ये आपसे पूछेगा, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल इंडिकेट कि ये रिकॉर्ड डेवलपमेंट यूजर का ये रिकॉर्ड नंबर 1 किसको इस वक्त दिख रहा है। सो बाय डिफॉल्ट यूजर डेवलपमेंट इज हैविंग दिस एक्सेस। व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस, फुल एक्सेस। व्हाई फुल एक्सेस, व्हाई, बिकॉज ही इज द ओनर। सी रीजन why this user is having full access on this record, because he created this record, he is the owner. Now you wanted to share this record to somebody else, तो आप यहाँ पे ऐड का बटन देख लो, ऐड करिए। तो अब हम देखेंगे कि हमें किस यूजर को, किसको वो रिकॉर्ड शेयर करना है। तो हमारी यूज केस के हिसाब से वी वांटेड टू शेयर दिस टू होम, मैनेजर यूजर। आइए देखिए, यूजर्स आप कहाँ कहाँ से ऐड कर सकते हो। पहला है पब्लिक ग्रुप, जो भी आपने बनाया नहीं है, आप आगे चल के बनाने वाले। उसके बाद रोल्स, रोल्स आपने क्रिएट किए हैं, यू क्रिएटेड सीईओ, सीएफओ, है ना, आप यहाँ से भी यूजर्स ऐड कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल सेल, दीज ऑल आर द रोल्स। आप यूजर ऐड कर सकते हैं रोल्स एंड इंटरनल सबऑर्डिनेट्स, रोल्स एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सबऑर्डिनेट्स, और या फिर यूजर्स। आखिरी ऑप्शन है यूजर्स। तो यूजर में सारे यूजर्स आपके लिस्ट आउट हो गए। तो ये जो रिकॉर्ड है हमारा डेवलपमेंट यूजर का, रिकॉर्ड नंबर 1, आई वांटेड दिस रिकॉर्ड टू बी गेट शेयर्ड टू द मैनेजर यूजर। तो मैं यहाँ पे मैनेजर क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल। व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस, लेट मी वंस अगेन चेक इट, रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर है आप अकाउंट पे कौन सी एक्सेस देना चाहते हो, रीड ओनली, रीड राइट। सेकेंड है अपॉर्चुनिटी, थर्ड है आपका केस। तो फिलहाल हम अकाउंट पे बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी और केस की बात ही नहीं चल रही। सो ऑन द अकाउंट आई वांटेड दिस पर्सन मैनेजर कुड हैव ओनली रीड ओनली एक्सेस। तो लेट मी नाउ सेव इट विद एवरीथिंग, विद यहाँ पर ऐड कर दिया, रीड ओनली कर दिया, सेव इट। नाउ सी, यूजर डेवलपमेंट को तो फुल एक्सेस है, यूजर डेवलपमेंट को तो फुल एक्सेस है बिकॉज ही इज द ओनर। मैनेजर कैन ऑल्सो एक्सेस द रिकॉर्ड, जो कि मैं क्रॉस वेरीफाई करने वाला हूँ अभी आप लोगों के सामने। The manager user can also have the access. What kind of access? He is having only read only access.
हाउ कम ही इज हैविंग द एक्सेस? विद द हेल्प ऑफ मैनुअल शेयरिंग। देखो यहाँ पे रीजन क्लियर लिख के आ गया कि आपने मैनुअली उसको ऐड किया है। नाउ दिस मैनेजर यूजर आल्सो हैव द रिकॉर्ड एक्सेस। वैसे देखा जाए तो यूजर अकाउंट में इसके दो दो रिकॉर्ड्स है ना, अकाउंट में इसके दो रिकॉर्ड्स है। और अकाउंट में जाता हूँ मैं, रिकॉर्ड नंबर 1 एंड रिकॉर्ड नंबर 2। यूजर डेवलपमेंट ने दो रिकॉर्ड्स क्रिएट करे हैं। आपने कौन सा शेयर किया है? सिर्फ 1 शेयर किया है। तो इस यूजर को कौन सा मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं, यहां से लॉग आउट करते हैं और अब हम चलते हैं मैनेजर यूजर पे। तो मैनेजर यूजर की लॉगिन पे जाता हूं मैं, and we have seen this previously, he was not having any access, right? Let's go to the account and see, यहाँ पर आ गया। Even if I go with all accounts के ऑप्शन में भी जाता हूँ तो भी उसको एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है। See, there's only one record he could have, and that is record number 1. Although this development user created 2 records, लेकिन 2 रिकॉर्ड मतलब ये नहीं कि दोनों शेयर हो गए, नहीं। 2 रिकॉर्ड में से जो आपने शेयर किया है, he could only access this record। तो ये आया अभी, डेवलपमेंट यूजर का रिकॉर्ड नंबर 1 इज नाउ एक्सेसिबल टू होम? मैनेजर। व्हाई? बिकॉज वी मैनुअली शेयर्ड दिस रिकॉर्ड टू हिम, दैट इज व्हाई ही इज हैविंग दिस एक्सेस। नाउ व्हाट वाज द एक्सेस, आई मीन द लेवल ऑफ एक्सेस वी हैव गिवन? हमने उसको कौन सी एक्सेस दिया था? रीड ओनली। तो रीड ओनली दिया है तो ये एडिट नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे एडिट का बटन दिख तो रहा है, ठीक है, लेट्स क्लिक दैट, सी व्हाट हैपेंस। इनसफिशिएंट प्रिविलेज, दैट मींस यू कैन नॉट एडिट इट। आप एडिट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर हैविंग ओनली रीड ओनली एक्सेस। अच्छा, वैसा नहीं कर सकते तो ठीक है, हमको यहाँ पे देखो इनलाइन एडिटिंग का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, दिख रहा है ये इनलाइन एडिटिंग। डबल क्लिक मार के देखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ अकाउंट नंबर 675 कुछ चेंज करता हूँ, लेट मी ट्राई टू सेव दिस। यू डोंट हैव द लेवल ऑफ एक्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। सी, तो neither by edit button or nor by this inline editing you cannot perform editing, because the kind of access this user is having, manager को कौन सी access दी गई है? read only, ठीक है, read only। तो record तो share हुआ, but what he can do, he can only read the record, nothing else, he cannot edit the record। तो ये है record sharing। एक और दिखाता हूँ इसमें भी आपको, let me log out from here, ठीक है, लॉग आउट कर लिया मैंने। अब डेवलपमेंट यूजर में फिर से चलते हैं, डेवलपमेंट यूजर में फिर से चलते हैं। प्रोबेबली ये यूज केस लिखी है नहीं लिखी है पता नहीं मुझको, नहीं लिखी, पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एनीवेज। सो डेवलपमेंट यूजर की मैं अकाउंट्स पे चलता हूँ। इसने 2 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 1 और 2। 1 शेयर किया है हमने मैनेजर को, यूजर मैनेजर यूजर को। अब मैं दूसरा रिकॉर्ड ओपन करता हूँ और इसको मैं शेयर करता हूँ। देखिए, अगर मतलब अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि डेवलपमेंट यूजर और मैनेजर यूजर का रिश्ता अगर हम देखें तो दीज आर सिबलिंग्स, दे आर एट द सेम लेवल, सो दे आर सिबलिंग्स। एंड द वाइस प्रेसिडेंट जो कस्टमर यूजर है, ही एक्चुअली इज द सबऑर्डिनेट। तो अगर दिमाग में थोड़ा सा भी ये कंफ्यूजन है कि ये जो यूजर है, ही कैन ओनली शेयर द रिकॉर्ड्स टू अपर हायरार्की, ऊपर के लोग, या फिर एटलीस्ट उसके साथ वाले यानी सिबलिंग्स, और दिस यूजर और एनीबॉडी एल्स और एनी ऑफ द यूजर कैन नॉट शेयर अ रिकॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट। अगर ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। whenever we wanted to share a record, we could share it to the people those who are upper in the hierarchy, those who are upper into the hierarchy, those who are in the same hierarchy, or even those who are in the lower in the hierarchy। I mean, we could share the record. If this user wanted to share, he could share the record directly to his managers, वो तो वैसे भी by default है, to the subordinates, to the to the siblings and to the subordinate also। तो अब मैं एक दूसरी यूज केस लेता हूँ आप सभी को कि ये डेवलपमेंट यूजर एक और रिकॉर्ड बनाया है इसने। ही क्रिएटेड 2 अकाउंट्स रिकॉर्ड, दिस वन इज रिकॉर्ड नंबर 2। लेट्स नाउ शेयर दिस रिकॉर्ड टू द पर्सन हु इज सबऑर्डिनेट। कौन है डेवलपमेंट यूजर का सबऑर्डिनेट? इसके नीचे कौन काम कर रहा है? कस्टमर यूजर। तो आइए हम ये भी करके देखते हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं कि दिस रिकॉर्ड नंबर 2 इज ओनली बीइंग शेयर्ड टू डेवलपमेंट यूजर। व्हाई? बिकॉज ही इज द ओनर। लेट्स नाउ ऐड वन मोर यूजर। यहां से आप सिलेक्ट करेंगे यूजर्स, कौन सा यूजर? कस्टमर यूजर। ऐड हिम। व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस? व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। रीड ओनली आप देख चुके हो, अब रीड राइट भी देख लो। What happens when you give this permission? Read write, okay, let's save this।
Now this permission, this person has been added. He is having read write access. Why? Because you have manually shared this record to him, right? Let's now log out from here. चलो यहाँ से लॉग आउट कर लिया. अब चलते हैं जरा सा कस्टमर यूजर पे. कस्टमर यूजर पे लॉग इन करते हैं. अकाउंट्स में चलते हैं. ऑल अकाउंट्स में चलते हैं. And now see we have one record over here. See, development user record number 2. Open it. Now first thing to observe over here is कि record मिल गया इसको. किसको मिल गया? Customer को. कौन सा record? Record number 2. Who created this? Development user. This record has been shared to customer. That is why he is able to see. What access? Read write access. दोनों access है इसको. तो क्या हम कुछ edit कर सकते हैं? Of course. ये देखो. अब आप यहाँ पर आपको insufficient privilege नहीं दे रहा है. You could access, warm को मैं hot कर देता हूँ. ठीक है. SLA को मैं gold कर देता हूँ. Priority को मैं high कर देता हूँ. Upsell opportunity maybe and save it. Did I was able to save the record? Yes. See. अब ये record जो है edit भी हो सकता है. Why? Because you have given this permission to this user. So this is what the concept of manual sharing. Understood? So this is what the concept of manual sharing. So the sharing, there are 3 different ways a record could be shared. The first is manually, the second is automatic, and the third is Apex. So today we have understood about, what we learned today was about manual sharing. So you could share a record manually. There's a button, sharing button. With the sharing button, you could add the users to whom you wanted to share the record. Now you could share the record to single and to the multiple users also. अभी तो मैंने single user ही सिखाया है, multiple users भी सिखाऊंगा आगे चल के. If and the level of access I could give is like read only and read write. Okay, these are the 2 different permissions on the record I could give to the second person. So this is all about manual sharing. Okay. By tomorrow we'll see one more. I mean, by tomorrow I'm not saying कि हम automated start करेंगे. Probably we could start. But when I start tomorrow's lecture, I'll start it from the manual sharing itself, because today what we have seen is like how to share the record to single user. Tomorrow we will be seeing like how to share the record to multiple users. But remember, when you wanted to share it to the multiple users, you should create the public groups. So by tomorrow, what we are going to do is like, we will first start by creating public groups. We will first create the public groups, and then we will, manually share the record to the public by the sharing buttons. That is what we are going to start by tomorrow. Okay. After this has been done, then we will touch this automatic sharing. ऐसा रहेगा हमारा आगे आने वाले वक्त में.